Silence, please. Yes, connect with your laptop. Anyone? If possible. So basically, I hope that you all have installed the required libraries. But before starting, I would like to just revise all these things, whatever we have covered last class, because very contributions are there, especially Sudanshu, Aman, and there are so many new students are there. Okay, so let me revise all these things. Actually, we are working on the voice assistance project. Okay, we are working on the voice assistance based project. Means right now in previous project you had worked about how to make attendance with the help of face recognition. Yes, sir. You have done. Yeah. Okay. So now you have to work on second project that is called voice assistant. Simply you can say Google Assistant. Simply you can say Alexa based project. So any name you can provide as per your compatibility. Here, but just remember all these things. Actually, for different projects you have to different. You require different libraries. Yes or no? You most of the students think that one setup will be used for all the project. No, you have to install different library as per the project type. Clear? And you have to also use the interpreter as per the project. Clear? So just remember everyone. Actually, I have already said the code also, of this Google Assistant. Just you can. No, sir. I have already said. Just see. No, after the class. So just see everyone. First thing that we have to do, install which one? Install Python 3.6.0 interpreter. Second, always remember. Okay, so Hers, Varun, and Sati, just come in. So one class is already going on. Just sit here. You don't need to start your class. Yes, everyone. So just install. Always remember that I am telling you many times. Just while installing the interpreter, any interpreter, means 3.6, 3.8, or 3.10, any interpreter. Just be careful while installing the interpreter. Why? You will see there is a add path option. Yes or no? You will see add path option. There is a tick option. Checkbox is there. Okay. Just try to select it. Here, if you will select it, then you will not face any problem. If you are not able to select, then what will happen? Some of the library will not work. Some of the ID will not recognize this. This interpreter. So there is a main issue that you are actually facing with the face recognition project. So while installing, always remember you have to select the add path option. Not in this project only. In any ID, whatever you are going to install in future, any ID, you have to install. You have to check the path. So this will add the path automatically. So you need not to do the manually. Here, everyone. So just remember this. Next thing that you have to do is. Okay, just remember everyone. Actually, communication phase is going on. So you can talk in English also. On only in English. Or some I have seen that those were earlier before communication phase. So murmuring, but now we have seen that there is no murmuring right now. Yes. Yes. You can murmur, but in the English. So the answer is not spoken in a single word right now. Yes or no? He know that he will speak, then he has to pay some fine. Yes, who is this inspector? There are too many inspectors. And all inspectors are absent. No, sir. All of them are present. So now just come to this.
Now okay. Just now. Sir, you have gave this information. Okay. Just revise or even next, you have to install what? You have to create new project. You have to create new project. How you will create project? Can you show? Yes. Yes. Move that one. Only this. Okay, just see everyone how to create the new project. Yes. I see there is some problem. It is problem with this projector size. Okay, don't worry. Just go to the file. Just see everyone. Go to the file menu. Go to new project. Okay. Actually, you already know how to create project. Yes. But actually, what is main important thing? Just you have to see. So this is the project name that you can change. Only you have to change at this place. As per your requirement, you can give any project name. Next thing, where suppose sometimes you will have this selected or this selected. Sometimes you can see in your project this may be selected or this may be also be selected. So choose any one of them. Just search for the Python 3.6. Either you will get in this list, either you will get in this list. Just see what is there. Just go to the base interpreter option. What is there? Base interpreter option is there. Just go to this and just select from this list. 3.6. Actually, the project that we are going to work on that is based on 3.6. So you have to select 3.6 on. Clear? If you can't able to see in this list, just go to this option. Okay? If you are not having in this option, just go to this option. So you will get the options, all the interpreter options. So you have to select which one? 3.6, means 3.6 will be there. Okay. Select it and just create the project. Just show. Actually, he has already created. You don't need to create, but you can just click on create button and the project will be created. One more thing, suppose you want to navigate from one project to another project, then how you will do? For this, what you have to do? Just click on file menu. You will see recent project. Is there recent project? Open recent. Yes. You will get all the projects name that you have already created, and just you can click on that. Clear, everyone? So just see. Apart from this, I have told you to install which one library? Just let me write all these things. Speech recognition. Yes or no? The same way I am writing. Recognition, the latest version that you will get option. Next, you have to install PyTXT. PyTXT Python text to speech. Python text to speech. Okay, then you have to install PyAudio. Actually, it is not used directly in your project, but it helps you to run the speech recognition. Clear? Internally. Next, if you want to implement jokes option, then you have to install PyJokes. If you want to implement, Wikipedia, then you have to use Wikipedia. If you are having what PyJokes is there, Wikipedia is there. Yes. If you want to enable, WhatsApp messaging facility, then you have to use WhatsApp. But remember that you will have latest version 8.5.3, but you have to select 3.2, and all remaining will have the latest version. Yes. One more thing that suppose if you want to enable Google search option, so you will just say that search on Google. Okay. Search on this, search on this. So if you want to enable Google feature here, then what you have to do? You have to install again one library that is called Google search. Google search. Google search. But remember that you have to use hyphen and then Py. Here, and this will also have the latest version. Yes. Here. Apart from it, if you want to, if you want to add, email feature, then you have to use SMTP.
Yes or no? If you want to enable web browser option, then you can use install web browser. So actually, I am going to give you the simple, basic introduction about this project, and you all have to add some new features in it. Clear, everyone? So you have to add new features in it as per your requirement or as per your, R&D experience, means research and development. Everyone. So just I am going to show you the simple or basic, project option, how to implement this. If you are able to understand all these things, then you are easily able to add some new features. So Bullet has also worked on that one. He has added many features in that. You all can also add some features. But I will show you how actually what is the framework, how it works. Clear? So these things you have to install in your. And I hope you will not. Okay, one more thing. Caution, you have to remember that, or that you don't need any. If you are suppose having 3.8 or the face recognition, then only you have to use Believe or that kind of software. But right now in this project, you don't need any Visual Studio, Desktop C++, nothing. Yes. You have to only use this library. Clear, everyone? Because earlier we were working on the face recognition based project. That's why we need Believe and Visual Studio libraries. Okay, everyone? So this is very, very simple. You can implement. Now come to the point. Can you increase the size? I have already shared, I think. Just switch on these lights. This one. Increase. Just go to the file menu and go to settings, press settings, and just go to the editor option, and just go to the font option, and just increase the 20. Just write 20. Okay, it is visible, everyone. Okay, just see. Actually, this is the basic project right now. I am showing you. Nothing difficult. You have to understand each and everything. I think it's a different. Yes, sir? Yes, I have quoted from somewhere else. Okay. But there is some problem. I think. Everything is We just do one thing. Where is my project? Just open if possible. You have not sent this. I have sent group also. Just to get possible. Actually, you have to import all the libraries. Clear? How you will import? Just see what is the use of speech recognition. What is the use of speech recognition? What is the use of PYPESS? Clear? If you are able to understand these things, then you are easily able to work on this project. So just see speech recognition. Why we use anyone? And what do you understand by speech recognition? Anyone? Okay, just do one thing. Suppose you are outside of this classroom, clear? And Uttam just speak anything, some line or some started singing a song, and then what will happen? You are able to recognize or not? Just tell me. You are able to recognize the Uttam voice or not? Just tell me. Yes or no? Why and how is possible? Because you are able to recognize the voice. You are able to differentiate between the voice. So that is called recognition. Similarly, if your system or your device or hardware or the microphone want to recognize your voice, then we need anyone. Then we Internet is not working. So can I see my phone? yes. Clear? So speech recognition will be used. It will help you to recognize the voice. Okay. Next one is what? PYPEX. What will happen? Text to speech. Yes. PYP means Python text to speech. It means that it will help you to convert text into speech. Means suppose you told that Alexa time. Clear? Then what will happen? Alexa will
find the time from your system, and they will explain, or they will say time is this. Yes or no? So actually, how he will get the text format. Yes. So you have sent only attendance to lecture. There's no just attendance. Last send. Today I have sent. Yes. Yes. In there is No message. no, sir, there is no message in our group today. Not possible. AQ. Yes, sir. I think you have sent it in some other group. Let me see. Switch to BCA-AKU. AQ. Let me just I have already shared. There is no message to it. Just check it. Yes, just shared. Yes. Okay, you know, you have to start and only you can. So basically, what will happen? Whatever you will give the command, okay? Whatever you will give the command means what your voice will be recognized by the speech recognition module, and they will recognize your voice. It will convert into the text that one. Yes or no? It will convert your voice into text, and then as per your text, that command you want to find the time. So according to your according to your command, they will find time in which format, text format, and then TYTTX will help you to convert that text into voice. That is called text to voice. Clear? Or text to speech. बस जैसे कि आपने मान लीजिए कुछ कमांड बोला उसमें, ठीक है, कि अलेक्सा टाइम, मतलब आप टाइप पूछ रहे हो उसमें, देन क्या होगा? आपका जो कमांड वो किस फॉर्म में था? वॉइस के फॉर्म में। उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा वो किसके हेल्प से? माइक्रोफोन को इनेबल करेगा रिकॉग्नाइज, और माइक्रोफोन में जो भी चीजें जाएंगी, वॉइस जाएंगी, उसको वो क्या करेगा? पहले रिकॉग्नाइज करेगा। कौन? स्पीच रिकॉग्निशन। एंड देन रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको क्या करता है? वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसमें करता है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट मिल गया उसको, अब उस टेक्स्ट के बेस पे वो क्या करता है? जो भी चाहिए आपको डिटेल फाइंड करेगा, और फिर वो फाइंड किस फॉर्म में करता है? अगेन वो टेक्स्ट में ही फाइंड करता है। क्या करता है? टेक्स्ट में ही फाइंड करता है। Okay, now focus. Just visible, just increase the size. Why this is half visible? Everything is visible. Okay, just 25. 20. Okay, visible everyone? Yes, sir. So basically, see everyone, I have imported all the required libraries. Five what? This is speech recognition. This will recognize your voice. This is PYTTX3. So whatever text you will use in your program, that will be converted into voice. Now, five what? If you want to implement WhatsApp feature, messaging feature, then you will use five what. Next one, date time, then Wikipedia is there, and then by jokes. If you want to ask for the jokes, then the Alexa will also. My audio is there. Why we are using this? So internally, it supports to the speech recognition. It will enable your microphone. So basically, it works as a hardware driver. It works as a driver between your program and hardware. Okay, now see what is this? Actually, in this, just listen to me, everyone. Actually, what Uttam, I can recognize your voice. So basically, this is what, and this is as a.
So basically, we don't want to write the whole name is speech recognition all the time. So just suppose someone is having the name like Gaurav Pratap Singh. Actually, in my college there was Gaurav, my friend was the Gaurav Pratap Singh. We all used to say that GPS. So this is aliasing. This is called aliasing. Similarly, this is called SR, means speech recognition. So we are going to provide a short name for this library. Now, just see, there is a function inside this library. Which one? Recognizer. What it will do? It will help you to recognize your voice with the help of microphone. Clear? So we are going to create an object of it. So we are going to create an object of this variable or this function, and then what will happen? Then we are going to create engine. Why engine? Because finally what you want is you want to convert your text into voice also. So that's why we are going to create this one. And this library is having init method. So this will initialize your your speaker to convert the text into voice. So that's why we are going to use this function. This will just take text as an input and it will convert into voice. Clear? So we are going to create engine. Or why we are going to say engine like this? Because in your program maybe you are using multiple times you are using this one. Yes. That's why we are going to create engine. Means suppose if your device, or suppose I am going to speak anything. So your speaker, you will receive when you are reading from the Zoom application. Then what will happen? Whatever I am saying you, that is converted into text first. Yes. And then that text is also sent to you, and you are going to listen in the voice. So what is happening there? Text to speech is there. Yes or no? So similar way we want that feature here. Okay, now there is what? Gate property. Actually, inside this there is a gate property feature. What it will help you? It will help you to find the voices. So you are saying that what you have to recognize? Voice. What you have to do? You have to use voice feature. There are so many options. Actually, you are selecting voice, and then you are going to create the same variable that is called voice. Now you are going to say, okay, so your system will just recognize your voice. Then what will happen? It will provide some ID to each and every voice. It will provide ID. Suppose what will happen? Whatever you are speaking, maybe the possibility that there are so many voices in your background. So it will just take the voice, and the voice, there is the clear voice, and give an ID. It will give an ID. So basically, what we are going to, whatever voice the system will hear, it will give the ID. So all these things are what happened? Okay, so all these things are for setup only. Just scroll up. Okay, now see. Now what we have to do? We have to define some functions. Why functions? This is what? Actually, in your program or in your project, what you will do? You will convert your text into voice or not? Just check. Yes, sir. Means जब आप टाइम के लिए पूछोगे, टाइम को बताएगा, कौन बताएगा आपको? आपका सिस्टम बताएगा, एलेक्सा बताएगा. तो उसी के लिए हमारे पास है कि जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे, किस फंक्शन में पास करेंगे? टॉप फंक्शन में. ये क्या करेगा? उस टेक्स्ट को कहेगा, आपको किस पे कन्वर्ट कर देगा? वॉइस पे. किस पे कर देगा? वॉइस पे. तो इसलिए हमने यूज किया इंजन डॉट से. और ये फंक्शन क्या करता है? जो भी टेक्स्ट आप देंगे ना, उसको वो क्या करेगा? वो वॉइस में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर? तो जब भी आपको अपने प्रोजेक्ट में, जब भी आपको टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना, आप क्या करोगे? इंजन डॉट से टेक्स्ट. आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ना, ये क्या करेगा? टेक्स्ट को लेगा. जैसे आपने पूछा एलेक्सा हु इज एलन मस्क, आपने सपोज पूछा, तो वो क्या करेगा आपको बताओ? तो आपने जो पूछा है हु इज एलन मस्क, तो क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो विकिपीडिया पे सर्च कर लेगा और एक दो लाइन जो भी है वो क्या करेगा? इस टेक्स्ट वेरिएबल में एंटर कर देगा. और फिर आपको क्या करना है? उसको आपको क्या करना है? वॉइस पे कन्वर्ट करना है. देन यू विल पास दैट टेक्स्ट इनटू दिस फंक्शन. क्लियर? And this will explain Elon Musk is the very richest person of this world, like this, this will you.
So this is the feature that we are going to provide. That's why we have created a function. Next, this is the okay. Now just listen to me. Actually, we are going to provide some feature. But first of all, what we have to do? Just tell me. Suppose you want to take help of Uttam or Nikhil or Risu. Suppose. So at first you have to say, Uttam, can you please help me? Yes. So it means that you are going to just give the command. You have to call You it. can't give the command. I can give the command. Uttam, you have to show the project. So basically, this is the command. In which format I have given the command? Voice format. And this will be recognized by our system. And the system will convert that voice into what? Text. And then that text, according to that text, what will happen? This will be passed to the required program. And what is the value? Suppose if you are saying that Alexa, play music. So I have used the play command for YouTube. Suppose. Then what will happen? I have used play music. Means what will happen? Our program will just take the command play. He will understand that. Oh, actually, I am saying that play on YouTube. Suppose I say that Alexa time. Then what will happen? Our program will listen, and the text will be converted with time. And what will happen according to that time? I have set the time as a time command. So whenever we will say time, then what will happen? Alexa will say current time, okay? Current date like this. So that's why first of all we have to take the command from outside world. Yes or no? That's why we have created this function. How it will take? Actually, one more thing. You have studied in C++ or Python exception handling concept. What is the use of exception handling? Anyone? Sulansu, what is the use of exception handling? Exception handling are used to catch errors. But why we use it? Catch error is very good. But why we use? What the concept is called? Anyone? Another students? Yes, if we combine both answer, it will be complete. Yes. So now basically what happens? Exception handling. What is exception first? Anybody? Tell me. What is exception? Anyone? We always try to use this word exception. Exception exists everywhere. हर जगह exception है. Especially chemistry, there is so much exception. Chemistry is full of exception. Physics is sometimes you will see exception in physics. What is exception? Exception is a situation where the rule is valid but outcome is not as per requirement. Maybe, but actually it is an abnormal condition. Yes sir? Means ऐसा condition जो हम सोचे नहीं थे, पर वो generate हो सकता है. Yes sir? हमने सोच के नहीं रखा था, but वो क्या हो सकता है? Generate हो सकता है. Logical error कह सकते हैं उसे. क्या कहते हैं उसको? जो possibility है हो सकता है. तो हम क्या करते हैं? वैसे चीज को जो कि हमें पता नहीं है, but वो होने की संभावना है, तो हम उसको क्या उसके लिए क्या करते हैं? Exception handling concept यूज करते हैं. ताकि यदि हमारे प्रोग्राम में exception क्या हो? Generate हो तो हम उसको क्या कर सके? Handle कर सके. Very good. So that's why we use try and accept keyword in Python. और आप C में आप पढ़े होंगे क्या होता है वहां पे? Try, catch, throw होता है. क्या होता है? Java में पढ़ोगे try, catch, throw और finally also there. Exception, except or there is throw and throws command is also there. So in Java you will learn try, catch, throw, throws and finally. In C++ there is three. Try, catch and here and throw is also there. So basically in Python there is try and accept. Means what will happen? कि यदि मान लो ऐसा हुआ कि try block क्या होता है? Try block वो block होता है. There is possibility of generating exception. जहाँ पे exception generate होने की संभावना होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं? यानी possibility कहाँ पर है? इसी में है ना? No sir. No sir. Dinesh. दिनेश ने बोला आज बोले.
आप लोग जो है क्लास खत्म होने के बाद ले लीजिएगा क्लास के लिए, ठीक है? ओके, जस्ट फोकस करिए। सो देखो होगा क्या, तो ये एरिया है जहां पे एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। मतलब ये कि हम कोई कमांड देंगे, हो सकता है वो कमांड नहीं समझे, एक्सेप्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है। ओके, और यदि एक्सेप्शन जनरेट हुआ वो कहां पे जाएगा, इसके पास जाएगा, ये उसे पास कर देगा, मतलब इग्नोर कर देगा। या आप चाहो तो हैंडल भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्या है, एनिमल। So I have set it that एक्चुअली आपको पता है रिकॉग्नाइजर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, रिकॉग्नाइजर यूज करोगे। रिकॉग्नाइज कहां से करेगा, किस डिवाइस से करेगा, ऑब्वियसली। तो यू आर गोइंग टू माइक्रोफोन फंक्शन एंड इसका नाम आपने क्या दिया, सोर्स, कि जो भी माइक्रोफोन के अंदर आएगा वो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। ओके, देन यू आर प्रिटी लिसनिंग, आपने देखा होगा लिसनिंग पर वहां पे शो होता है कि मतलब वो रेडी है, अब आपको कुछ बोलना है। देन आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, इसका ऑब्जेक्ट था ये रिकॉग्नाइजर का ऑब्जेक्ट था, इसका था ये रिकॉग्नाइजर। तो रिकॉग्नाइजर विल यूज अ लिसन फंक्शन, जो क्या करता है, जो भी आप माइक्रोफोन में बोलोगे ना वो क्या करेगा, सोर्स में रख देगा, लिसन कर लेगा, ठीक है। और उसको कहां रख देगा, वो यानी सोर्स के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू वो जो भी लिसन करेगा, कौन, रिकॉग्नाइजर, वो कहां स्टोर कर देगा, किस फॉर्मेट में करेगा, टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट में नहीं करेगा, अभी देखो क्या होगा। देन अब जो भी वॉइस के पास आया, जो भी डेटा इस फॉर्म में आया, वो कहां पे, उसके अंदर एक और फंक्शन रिकॉग्नाइज गूगल, मतलब उस गूगल के हेल्प से फाइंड करेगा आखिर उस वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने जो भी बोला उसको वो क्या करेगा, उस वॉइस को लेगा कहां पे, गूगल पर, गूगल के थ्रू वो हेल्प से लेगा कि आखिर उसका मतलब क्या है, और उसको क्या कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब फाइनली जो आपने बोला वो क्या था, वो कमांड के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में कहां चला गया, इस वैल्यू को। और साथ में आप क्या कर रहे हो, लोड फंक्शन यूज करो, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो क्या होगा, सारे के सारे लोड में चला जाएगा, मतलब लोड डेटा में चला जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई कहता है कि अलेक्सा टाइम, अलेक्सा हु इज नरेंद्र मोदी, अलेक्सा हु इज एलन मस्क, तो कोई वर्ड अलेक्सा भी तो यूज कर सकता है कमांड में। लेकिन ये बताओ कि अलेक्सा सर्च कर रहा है, हम अलेक्सा मतलब यूज क्यों कर रहे हैं, अलेक्सा को बताने के लिए कि तुमको ये काम करना, या नहीं भी यूज कर सकते। लेकिन मान लो आपने अपने कमांड में क्या दिया था, अलेक्सा टाइम बोला था, अलेक्सा प्ले म्यूजिक बोला था, तो अलेक्सा तो आपका कमांड नहीं है, अलेक्सा तो सर्च नहीं करना, अलेक्सा तो आपने बस उस केस में आप क्या करोगे, जो भी कमांड आपने दिया था उसे अलेक्सा वर्ड को हटाओगे या नहीं हटाओगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है इफ अलेक्सा इन कमांड, कमांड में है क्या, कमांड में क्या है, वो सारा टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट में यदि क्या है, एक स्ट्रिंग होगा एक तरह का, उसमें यदि अलेक्सा वर्ड है तो आप क्या करना चाहोगे, उसको रिप्लेस करना चाहोगे, किससे, स्पेस, ब्लैंक से, मतलब उसको हटाना चाहोगे आप। ये फंक्शन क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, अलेक्सा वर्ड हट गया उससे, अब जो बचा वो क्या है आपका, कमांड, कमांड है, यस और नो। वो कमांड कहां जाएगा, कमांड वेरिएबल में, और आप उसको क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, वो प्रिंट करके भी दिखा देगा। आप जैसे बोलोगे ना अलेक्सा टाइम, तो वहां पे टाइम बताएगा, अलेक्सा वर्ड नहीं बताएगा। और यदि कोई एरर होगा तो वो कहां जाएगा, एक्सेप्ट में, और ये पास कर देगा। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो बताओ, इस फंक्शन में क्या कर रहे हो, फाइनली कौन सा फंक्शन था बताओ, टेक कमांड फंक्शन। और वो टेक कमांड क्या करेगा, वो फाइनली जहां भी कॉल करोगे आप, वहां पे सारा जो वैल्यूज ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में वो क्या कर देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। जस्ट अब ये आपका मेन कोड है, यहाँ पे समझे, ये आपका मेन कोड है। जो अभी तक आपने देखा कि कैसे टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, और फिर आपने देखा कि कैसे आप वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों आपने देखा। तो ये बताओ मुझे टेक कमांड क्या करता है, एनिमल टेक द इनपुट क्या करता है, इसका काम है वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। और टॉक का क्या काम है, टॉक फंक्शन का क्या काम है, टेक्स्ट टू वॉइस, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना, क्लियर, काम हो गया। मतलब वॉइस से टेक्स्ट और टेक्स्ट से वॉइस दोनों काम कर चुके होंगे। अब हमें क्या करना है, कमांड देना है। चलो मेन फंक्शन ये होगा आपका, रन अलेक्सा, अलेक्सा फंक्शन है, इसमें जो भी कमांड आएगा इस फंक्शन के थ्रू वो कहां चला जाएगा, टेक कमांड। एक्चुअली ये फंक्शन क्या कर रहा है बताओ मुझे, जो भी आपने माइक्रोफोन में बोला था
वो किसमें कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में, और वो इसमें पास कर रहा है वो कमांड जाएगा, प्रिंट भी कर देगा यहाँ भी। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे आप कंडीशन सेट किए, उस कमांड में कौन सा फीचर चाहते हो आप ये बताओ। आप अपने प्रोजेक्ट में कौन सा फीचर चाहते हो, आप यूट्यूब यूज करना चाहते हो, आप टाइम पास करना चाहते हो, विकिपीडिया पे सर्च करना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे फीचर चाहते हो। अभी मैं कुछ बताऊंगा, बाकी आप ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। पहला देखो क्या, इफ प्ले इन कमांड, क्या है इफ प्ले इन कमांड, मतलब क्या हो गया देखो, यदि अब हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, दिखाओ जरा सा, प्ले वर्ड रखा है, देखो यहाँ से, ये क्या है, प्ले ऑन वाईटी, मतलब पता है क्या होता है, यूट्यूब। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे टाइम, डेटेड टाइम यूज किया हमने। यदि हम प्ले वर्ड यूज करेंगे ना कमांड में, इसका मतलब यूट्यूब पे चलाना है। यदि हमने टाइम बोला है कमांड में, मतलब टाइम क्या करना है, टाइम बताना है। आगे चलो, यदि हमने बोला हु द हेक इज, इसका मतलब कहां पे करना है, देखो विकिपीडिया पे सर्च करना। आप चेंज भी कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ऐसे हमने पूछा है डेट, हमने पूछा एलेक्सा से डेट, आई एम इन रिलेशनशिप, सो बेसिकली यू कैन यूज डेट, जो भी आप सेट करना चाहते हो वो यहाँ पे सेट अप कर सकते हो, कोई दिक्कत। आप चाहो तो डेट बता सकते हो, या आप चाहो तो ये डेट के बारे में बता सकते हो, क्लियर, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो, क्लियर। नेक्स्ट देखो, आप जोक्स बोलोगे तो वो जोक्स बताएगा, और इस तरह से आप चाहे तो क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हो। लास्ट में मान लो इसमें से कोई कमांड नहीं होगा तो क्या होगा, प्लीज से द कमांड अगेन, मतलब वो नहीं समझ पाए आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने प्रोग्रामिंग किया ही नहीं है इसमें, तो वो क्या बोलेगा, मतलब फिर से कमांड। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, इफ सिंगल वे में इलिजिबल के बहुत सारे फीचर्स, गूगल फीचर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो डेट एंड टाइम ऑलरेडी है इसमें, वो डेट यूज कर सकते हो जो डेट एक्चुअली है। इसके बाद आप चाहो तो उसमें बहुत सारे फीचर्स को, ब्राउजर फीचर ऐड कर सकते हो, है ना, गूगल फीचर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें ईमेल सर्विस यूज कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे सर्विस आप यूज करेंगे, क्लियर है इसमें। अब देखो ये जब हो गया ना, तो अब चलते ऊपर थोड़ा सा, ये नहीं करना, scroll down, just scroll down, scroll down, वो scroll down मतलब नीचे हमें जाना है, scroll down भी मैंने बोला, अभी तुम डाउन कर रहे हो ना, तभी ऊपर जाएगा, scroll down उसी हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे, तो देखो बेसिकली हमने इस तरह से कंडीशन से क्या किया, देखो यदि हमारे कमांड में क्या है, प्ले वर्ड है, मतलब क्या होगा देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने बोला प्ले, प्ले है ना, बच्चों वाला गाना क्या होता है आजकल, बाबा ब्लैक से, तो हमने बोला मान लो प्ले बाबा ब्लैक से, तो क्या होगा, क्या प्ले कमांड यूज करेगा वो, अब वो प्ले वर्ड को हटाएगा ना, क्योंकि इसको क्या ढूंढना है यूट्यूब पे, बाबा ब्लैक। सिंगल वे में हम क्या करेंगे, जो प्ले कमांड है उसको रिप्लेस कर देंगे ब्लैक स्ट्रिंग से, अब बचेगा क्या इसमें, जैसे मैंने बोला था प्ले बाबा ब्लैक से, तो क्या होगा, बाबा ब्लैक से पे चला जाएगा। एंड देन हम क्या करें, टॉक, मतलब टॉक फंक्शन को यूज करें, वो बताएगा कि आपका गाना चलने वाला है, क्या चलने वाला है, टॉक, प्लेइंग बाबा ब्लैक, प्लेइंग सॉन्ग, मतलब जो भी आप, तो वो क्या बताएगा हमें, ये फंक्शन कि आपका चल रहा है, मतलब इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, फाइव वर्ड की, ये हेल्प करता है आपको, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसमें से क्या है, प्ले ऑन यूट्यूब, ये क्या करेगा आपको, ये कीट यूट्यूब पे ले जाएगा और वहां पे आप जो भी पास कर तो वो वहां से ओपन कर देगा, एक फीचर ऐड हो गया। सेकंड, मान लो आपने अपने कमांड में क्या यूज किया था, टाइम, तो ये क्या करेगा आपको, टाइम, करंट टाइम है। वैसे ही देखो यदि आपने यूज किया है, आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, सीधा हु इज भी कर, जस्ट कन्वर्ट इट, हु इज रखोगे, थोड़ा सो अब हमने क्या यूज किया, हु इज। अब मान लो हमने पूछा हु इज एलोन मस्क, तो क्या होगा, हु इज सर्च करना है या एलोन मस्क सर्च करना है, एलोन मस्क, तो हम क्या करेंगे, हु इज को हटाएंगे ना, हु इज यदि कमांड में है तो क्या होगा, हटा देंगे उसको, और क्या करेंगे हम, देखो बाकी विकिपीडिया पे उसका समरी आएगा और हम उसको इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे और उसको इसको कॉल करेंगे, बताओ टॉक फंक्शन को कॉल करेंगे,
कि जो भी टेक्स्ट हमारे पास आया उसको तुम पढ़ के सुनाओ, स्पीच में कन्वर्ट करके सुनाओ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ना? Yes, sir. लेकिन हाँ, इसमें दो चीज आपको ऐड करना है, तो क्या मैं प्लीज बता देता हूँ। पहला गूगल पुट डाउन कीजिए। पहला क्या करना है आपको, गूगल। दूसरा क्या करना है आपको, ब्राउजर। तीसरा चाहे तो आप नोटपैड पे चालू कर सकते हैं, या अपने सिस्टम में एप्लीकेशन भी चालू कर सकते हैं। Notepad, MS Word, and I have done several. आप चाहो तो जितने भी सिस्टम में एप्लीकेशंस है, जैसे नोटपैड चालू करना हो गया, ब्राउजर चालू करना हो गया, गूगल सर्च करना हो गया, नोट डाउन करो, Here it is. ये सब ऐड करना है। देखो यहाँ, कहाँ देखो, Yes, sir. Yes, sir. MS Word, the last one. अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट फाइल। ये ओएस, देखो मैंने क्या बोला था आपको ओएस टाइटल के बारे में, कि ये आपके सिस्टम ओएस से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और आपने लिखा स्टार्ट फाइल, मतलब ये जो भी पाथ आप दियो, किसका पाथ दियो, Notepad. नोटपैड का पाथ, वो ओपन कर देगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्राउजर का दोगे तो ब्राउजर ओपन कर देगा। आप यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन दोगे, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद एमएस वर्ड का दिए हो तो एमएस वर्ड का फाइल का पाथ दे दिए हो, तो बहुत आसान है करना, ठीक है। आसान है ना, करके दिखाना है ऐसे। तो उसमें फीचर्स आप जितना ऐड करोगे उतना अच्छा है, उतना एडवांस रखा हो। यस सर, तो कंप्लीट हो जाएगा। So I had a question. See. आप एक काम और कर सकते हो, पता है क्या, क्वेश्चन से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्वेश्चन। आप एक काम और ऐड करना उसे, पता है क्या, एलेक्सा पुश डेवलपर अपना ऐड करना है। सबको अपना अपना क्या ऐड करना है उसमें, डेवलपर। आप पूछोगे पुश डेवलपर मतलब उसको बनाया कौन है, उसको Who is your developer? नहीं, डेवलपर बोलोगे मतलब वही है ना। Who is your developer कहोगे तो क्या करना चाहिए, आपका डिटेल बताना चाहिए उसको। ये है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसने ये बनाया है, इसका ये यहाँ पे सेक्टर है, ये इसका एज इतना है, ये सब आप टेक्स्ट में डाल दो, प्ले कर दो, हो गया बात खत्म। सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं, आपको एक स्ट्रिंग लेना है, ऐसा डेटा रख देना है, वहां पे कॉल करना है, सेट टॉप वाले कमांड, Just वहाँ आउटपुट दे देगा। तो बेसिकली आप उसमें बहुत सारे फीचर को ऐड कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत होगा तो इसके लिए आप आशीष से, रिशु से, रिशु तुम्हारा कोई ठीक था, रिशु से और एक बुलेट, कहाँ गया बुलेट, Absent. यू कैन टेक हेल्प ऑफ फ्रॉम दिस, ओके। आप कंप्लीट कीजिएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। हम चाहते हैं कि 5-10 प्रोजेक्ट कम से कम आप लोगों को करवाएं। यस, वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बिना कंप्लीट किए इस तरह को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बता दिया हम कर लेंगे। नेक्स्ट विल बी यू नो व्हाट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। क्या होगा ऑब्जेक्ट में, क्या होगा, या स्टूडेंट डिटेक्शन बताएंगे, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा डिटेल बता देगा, रोल नंबर क्या है, It will put the cup in front of the camera. ये बताए कब है, वो लैपटॉप है, वो क्या कहते हैं, उत्तम है, ये रिशु है, ये रिशु है, ये आशीष है, ये अमन है, ये सारा बता देगा। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। Sir, my question is, where I have used voice 0. There are two voices in PyText. One is David and another is Zira. If I want to use some other voices, how can I use it? Voice 0 is